सो है गाइस, तो एज वी हैव प्रॉमिस्ड कि पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से पढ़ेंगे, जहाँ पे हम 25 मिनट्स के लिए पढ़ेंगे एंड देन 5 मिनट्स के लिए हम ब्रेक लेंगे. दिस इज़ द ब्रेक टाइम. सो जो 5 मिनट्स में है हम इसमें कुछ भी रैंडम टॉपिक उठाएंगे एंड अपनी मनपसंद का पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट. क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, वी हैव lots of books, so let's study without wasting any second. So let's see platelet count. So decreased platelet count is associated with prolongation of bleeding time. Clinically, bleeding occurs when platelet count is less than 40,000 per mm cube of blood. So decreased platelet count is associated with the prolongation of bleeding time. जब प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है एंड ब्लीडिंग होता है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है. क्लिनिकली जो ब्लीडिंग अकर्स ऑन प्लेटलेट काउंट इज़ लेस देन 40,000. तो 40,000 से कम आ गया प्लेटलेट तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है. 40,000 से कम नहीं आना चाहिए. 40,000 से कम आ गया मतलब ब्लीडिंग हो सकता है. ये बहुत कम काउंट है प्लेटलेट का, वहाँ पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन देंगे. ठीक है, तो ब्लीडिंग टाइम जो होता है, ब्लीडिंग टाइम एसेसेस इंटीग्रिटी ऑफ प्लेटलेट्स. ब्लीडिंग टाइम से पता चलता है प्लेटलेट्स कैसे इंटीग्रेट हो पा रहे हैं, इंटीग्रिटी हो पा रही है उनमें. तो ब्लीडिंग टाइम इज़ प्रोलॉन्ग इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बास्थीनिया. थ्रोम्बास्थीनिया प्लेटलेट काउंट इज़ नॉर्मल बट फंक्शनली प्लेटलेट्स आर अब नॉर्मल. तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट की कमी हो जाती है एंड ब्लीडिंग बढ़ जाती है. एंड थ्रोम्बास्थीनिया में प्लेटलेट काउंट जो है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन प्लेटलेट अब नॉर्मली फंक्शन कर रहे होते हैं, जिस वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकती है, ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है. प्लेटलेट एग्रीगेशन टेस्ट में एबिलिटी ऑफ प्लेटलेट टू एग्रीगेट इन इज असेस्ड विद द हेल्प ऑफ एग्रीगोमीटर. So ability of platelet to aggregate is assessed with the help of aggregometer. प्लेटलेट कितनी अच्छी तरह से एग्रीगेट हो पा रहे हैं, साथ आ पा रहे हैं, वो हम एग्रीगोमीटर से असेस करते हैं. प्लेटलेट एडेसिवनेस टेस्ट. प्लेटलेट एडेसिवनेस टेस्ट क्या है? तो प्लेटलेट्स एबिलिटी टू एडियर इज टेस्टेड बाय अलोइंग एंटीकोagulated blood to pass through a plastic tube containing glass beads, during which platelets stick to the beads. प्लेटलेट एडहेरेंस इज मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग द प्लेटलेट रिटेंशन इन द ट्यूब. तो जो प्लेटलेट होता है वो ग्लास ट्यूब को स्टिक होता है. जो प्लेटलेट होता है वो ग्लास ट्यूब को स्टिक हो सकता है. तो क्या करते हैं, एक एंटीकोagulated ब्लड जिसमें एंटीकोagulated है वो ब्लड हम पास करते हैं प्लास्टिक ट्यूब से. एंड फिर जब वो ब्लड प्लास्टिक ट्यूब से पास करते हैं, जो प्लेटलेट हैं वो स्टिक हो जाते हैं ग्लास बीड्स में. तो हम क्या करते हैं, जो प्लेटलेट एडेसिवनेस टेस्ट कैसे करते हैं? प्लेटलेट एडेसिवनेस टेस्ट करने के लिए हम प्लेटलेट लेते हैं, जो एंटीकोagulated ब्लड है वो लेते हैं. एंटीकोagulated ब्लड में क्या करते हैं, प्लास्टिक ट्यूब लेते हैं, उसमें ग्लास बीड्स होते हैं. तो वो ग्लास बीड्स को जो प्लेटलेट है वो स्टिक होते हैं. तो प्लेटलेट ग्लास बीड्स को स्टिक हो सकते हैं, तो ग्लास बीड्स को स्टिक होते हैं. सो प्लेटलेट एडहेरेंस इज मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग द प्लेटलेट रिटेंशन इन द ट्यूब. कितनी देर तक रिटेंट रहते हैं, कितनी देर तक वहाँ पे उनका रिटेंशन बना रहता है, उस हिसाब से हम प्लेटलेट एडेसिवनेस टेस्ट करते हैं. क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम है व्हेन ब्लड इज कलेक्टेड विदाउट एंटीकोagulant. क्लॉटेड ब्लड रिट्रैक्ट्स एंड 50% रिट्रैक्शन अकर्स बाय द एंड ऑफ 1 आवर. तो 1 घंटे में जो भी हम ब्लड लेते हैं उसका आधा परसेंट 50% रिट्रैक्ट हो जाता है. क्लॉट रिट्रैक्शन कम्प्लीट्स एट द एंड ऑफ 18 to 24 आवर्स. 18 से 24 घंटे में क्लॉट एकदम रिट्रैक्ट हो जाता है. सो व्हेन रिट्रैक्शन इज लेस देन 50% इन 1 आवर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और प्लेटलेट माल फंक्शन होता है. तो प्लेटलेट की डिसफंक्शन से देखते हैं हम. तो आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरिया. तो ये एक कंडीशन है जहाँ पे आईटीपी एक कंडीशन है, एक प्राइमरी ऑटो इम्यून पुरपुरा है characterized by thrombocytopenia. This usually occurs due to formation of antibody against platelet. तो यहाँ पे प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है.
इट अकर्स इन टू फॉर्म्स, चाइल्डहुड ITP एंड अडल्ट ITP। चाइल्डहुड ITP में क्या होता है, ये बहुत कॉमन होता है, लेकिन बहुत कम सीवियर, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये बहुत कॉमन होता है। अकर्स इक्वली इन बोथ जेंडर्स दैट यूजुअली रिजॉल्व साइमल्टेनियसली इन 6 मंथ्स में वो अपने आप ठीक हो जाता है। अडल्ट ITP बहुत कम देखने को मिलता है और ये ज़्यादातर फीमेल्स में होता है। द कॉमन फीचर ऑफ द डिसीज इज ब्लीडिंग दैट यूजुअली अकर स्पॉन्टेनियसली, ब्लीडिंग होती रहती है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती रहती है एंड ये बहुत कॉमन फीचर है इसका। जो स्किन है वो कॉमनेस्ट साइट ऑफ हेमरेज एग्जिबिटिंग पेटिकी और ecchymosis. The bleeding occurs from mucous membranes in the form of epistaxis, bleeding from the nose or bleeding gums. Epistaxis मतलब नाक से खून आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो ब्लीड होते हैं। डायग्नोसिस इज मेड बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एनीमिया एंड एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडीज इन द पेशेंट। के अंदर कोई एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडीज तो नहीं है। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड स्प्लेनेक्टोमी, स्किन को निकाल दिया जाता है एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्रेगनेंसी में भी होता है, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज कॉमनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। अ फॉर्म कॉल्ड gestational thrombocytopenia causes excessive bleeding during parturition. Another form is associated with preeclampsia, preeclampsia भी होता है। न्यूनेटल autoimmune thrombocytopenia, NATP कब होता है, occurs when the newborn and platelet count is less than 50,000 cubic mm of blood. It may be associated with autoimmune hemolytic anemia. Antibodies are demonstrated against platelet specific alloantigens. NATP is treated by platelet transfusions, steroid and immunoglobulins से ट्रीट किया जाता है। तो न्यूनेटल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जहाँ पे 50,000 से कम प्लेटलेट्स मिलते हैं, एंड ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया भी साथ में रहता है, एनीमिया भी रहता है, ऑटो हेमोलाइटिक एनीमिया। और प्लेटलेट स्पेसिफिक एलो एंटीजेंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट अपना ओरिजिनल टॉपिक। तो फर्स्ट लेट्स कंक्लूजन, डॉलर पॉइंट्स लेके जाते हैं। तो यहाँ पे डॉलर पॉइंट है, जो प्लेटलेट का फंक्शन होता है, प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट हम पढ़ रहे थे। तो जो प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट होता है उसमें हम प्लेटलेट काउंट देखते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट 40,000 क्यूबिक mm से कम होता है तो वहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, जहाँ पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं। ब्लीडिंग टाइम भी हम प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट में ब्लीडिंग टाइम देखते हैं, और ब्लीडिंग टाइम बढ़ी हुई अगर आती है तो वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जहाँ प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, या फिर प्लेटलेट्स की कमी नहीं हुई लेकिन प्लेटलेट अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बास्थीनिया होता है। और प्लेटलेट एग्रीगेशन टेस्ट होता है, जहाँ पे हम एसेस करते हैं कि एग्रीगोमीटर से एसेस करते हैं कि प्लेटलेट किस तरह से एग्रीगेट हो रहे हैं, उनकी एबिलिटी ऑफ प्लेटलेट टू एग्रीगेट, उनकी एबिलिटी टेस्ट करते हैं बाय एग्रीगोमीटर। प्लेटलेट एडेसिवनेस टेस्ट में हम एंटीकोएगुलेटेड ब्लड लेते हैं, हम प्लास्टिक ट्यूब से पास करते हैं, उस प्लास्टिक ट्यूब में हम ग्लास बीड्स रखते हैं, हम प्लेटलेट्स ग्लास बीड्स को स्टिक करते हैं। तो प्लेटलेट्स का रिटेंशन कैसा है ट्यूब में, प्लेटलेट रिटेंशन इन द ट्यूब, उसको एस्टिमेट करने से हमें प्लेटलेट एडहेरेंस मिलता है। क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम भी देखते हैं, 50% क्लॉट रिट्रैक्शन होता है बाय द एंड ऑफ 1 आवर में, और अगर वो 1 आवर में 50% रिट्रैक्शन नहीं हुआ तो देयर इज़ अ मालफंक्शन इन द प्लेटलेट फंक्शन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या प्लेटलेट मालफंक्शन हो सकता है। और 18 to 24 आवर्स में पूरा क्लॉट रिट्रैक्ट हो जाता है। तो व्हेन ब्लड इज़ कलेक्टेड विदाउट एंटीकोएगुलेंट, ब्लड रिट्रैक्ट्स, 50% रिट्रैक्शन जो है 1 घंटे के अंदर हो जाता है, बाय द एंड ऑफ 1 आवर हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा प्लेटलेट के बारे में। अब हम अपना ओरिजिनल टॉपिक कंटिन्यू करते हैं।
तो हम पढ़ रहे थे ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में, तो लेट्स कंटिन्यू अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इज द प्लेक्सस ऑफ नर्व्स formed by anterior ventral rami of lower fourth cervical and the first thoracic spinal nerves, and a little contribution from C4 and T2 spinal nerves also. If the contribution of C4 is large then when compared to the T2, when the T2 is absent, so it is called prefixed brachial plexus. And if the contribution of C4 is absent and that of the T2 is large, it's called postfixed brachial plexus. Prefixed and postfixed brachial plexus based on the contribution of C4 and T2 spinal nerves. The brachial plexus is the plexus of nerves. Brachial plexus is nothing but the plexus of nerves, and this plexus of nerves is formed by the anterior rami of lower four cervical nerves, and the first thoracic nerve, spinal nerve, with a little contribution from C4 to T2 spinal nerves. If the C4 contribution is larger and the T2 contribution is absent, that is called prefixed brachial plexus. And when the contribution from T2 is large and that of T2 is absent, C4 is absent, T2 is large, then it is called postfixed brachial plexus. What are the components of brachial plexus? So brachial plexus consists of 4 components. The components are roots, trunks, divisions, and cords. So the 4 components, we can remember it by the mnemonic: remember to drink cold beer before branches. So the roots and trunks are located in the neck division behind the clavicle and cord in the axilla. So the roots are located in the neck. The roots are located in our neck. The roots of the brachial plexus are located in the neck. Roots are located in the neck. Divisions are located behind the clavicle, and the cords are located in the axilla. You can find the cords in the axilla, and the divisions are present in the clavicle, and in the neck you can find the roots and trunks. So roots and trunks are found in the neck, and divisions are found in the clavicle, and the cords are found in the axilla. So divisions you can find behind the clavicle, roots and trunks you can find in the neck. Divisions behind the clavicle, and cords in the axilla. So the roots are constituted by the anterior rami of C5 to T1 spinal nerves. Roots are constituted by anterior rami of C5 to T1 spinal nerves. They are located in the neck deep to the scalenus anterior muscle. So the roots are constituted by the anterior primary rami of C5 to T1 spinal nerves. The roots are constituted by the anterior primary rami of C5 to T1 spinal nerves. They are located in the neck deep to the scalenus anterior muscle, deep to scalenus anterior and neck. Trunks, there are 3 trunks. They are formed as the C5, C6 is anterior primary rami, ventral rami. They will join to form the upper trunk. The C7 root alone forms the middle trunk, and C8 and T1 they join to form the lower trunk. They lie in the neck, occupying the cleft between the scalenus medius behind and scalenus anterior in front. So divisions, so each trunk divides into anterior and posterior. They lie behind the clavicle. So each trunk divides into anterior and posterior divisions. Cords, the cords are 3. They are formed as the anterior division of upper and middle trunks. The cords, there are 3 cords. The anterior division of upper and middle trunks unite to form the lateral cord, and the anterior division of the lower trunk continues as the medial cord. The posterior divisions of 3 trunks unite to form the posterior cord. Okay, so the cords, there are 3 cords. The anterior division of the upper and middle trunk unite to form the lateral cord, and the anterior division of lower trunk continues as the medial cord. The posterior division of the 3 trunks unite to form the posterior cord. The cords are formed as follows: the anterior divisions of the upper and middle trunks unite to form the lateral cord.
the anterior division of lower trunk and as the medial cord, and the posterior divisions of the three trunks unite to form the posterior cord. So the anterior division of upper and middle trunk they unite to form the lateral cord, and the anterior division of lower trunk alone continues as the medial cord, and the posterior divisions of all the trunks, three trunks unite to form the posterior cord. Talking about the branches, so there are some direct branches from the roots and trunks. So let's see what are they. From the roots you can find that is the C5, C6, C7 roots. You can find the long thoracic nerve, or it is also called nerve to serratus anterior. Serratus anterior muscle are present on your ribs. On your ribs you can see serratus anterior, they give the serratus appearance. So this nerve is the long thoracic nerve. C5, C6, C7 roots is also called nerve to bell, and damage to this nerve causes winging of scapula. And winging of scapula, you can see the prominent medial border and the inferior angle of the scapula are prominent. Medial border and inferior angle of scapula are prominent. Dorsal scapular nerve is C5. C5 is the dorsal scapular nerve. It supplies the rhomboidus and levator scapula. It is also called nerve to rhomboidus. So it supplies the rhomboidus and levator scapula. C5 alone as dorsal scapular nerve. Dorsal scapular nerve. In addition to the long thoracic and dorsal scapular nerve, branches are given with the roots to supply scalene muscles and longus colli muscle from C5 to C8, and there is contribution to the phrenic nerve C5 which supplies diaphragm. So the branches from the root are the long thoracic nerve from C5, C6 and C7, and the another is dorsal scapular nerve. Dorsal scapular nerve C5. Dorsal scapular nerve is C5. Okay, so these are the dorsal scapular nerve. Okay, so this is the dorsal scapular nerve C5, and the long thoracic nerve, one nerve to serratus anterior by C6, C5, C6 and C7. Three roots, divisions from three roots. Nerve to serratus anterior, also called long thoracic nerve C5, C6, C7. It only supplies serratus anterior muscle, one of the key muscle for overhead abduction. So serratus anterior key muscle for overhead abduction along with the teres minor. So nerve to rhomboidus, also called dorsal scapular nerve C5. This nerve supplies the rhomboidus minor and rhomboidus major muscle. Rhomboidus minor and rhomboidus major muscle responsible for retraction of shoulder girdle, gives a branch to levator scapulae. And also gives a branch to levator scapulae, levator scapulae muscle. So you can see the levator scapulae muscle. Nerve to rhomboidus. Nerve to serratus anterior. Long thoracic nerve. It only supplies the serratus anterior muscle, and nerve to rhomboidus supplies the rhomboidus major and minor and the levator scapulae. So rhomboidus major and minor, they are responsible for rhomboidus are for retraction of scapula, shoulder girdle. Okay. Branches to longus colli and scalene muscles C5 to C8, and branch to phrenic nerve. The root of phrenic nerve from C5 is small one. The main root is from C4. The phrenic nerve is the sole motor nerve supply of thoraco-abdominal diaphragm. In addition, it carries afferent fibers from mediastinal pleura, fibrous pericardium. In addition, it carries afferent fibers from mediastinal pleura,
fibrous pericardium and part of parietal peritoneum. So this nerve supplies the afferent fibers. From mediastinal pleura, fibrous pericardium and part of parietal peritoneum. So whenever we get pain is because of this fibrous pericardium and part of parietal peritoneum, mediastinal pleura. Mediastinal pleura, fibrous pericardium, part of parietal peritoneum. Okay, so from root you can get branches to the longus coeli and the scalene muscles and longus coeli muscles, and a contribution to the phrenic nerve. Phrenic nerve is actually C4 and is the sole nerve to supply the thoracoabdominal diaphragm. From the trunk you can get the suprascapular nerve and the nerve to subclavius. The branches arising from the roots and trunks are the supraclavicular branches of the brachial plexus. Just from the trunk you can get suprascapular nerve and nerve to subclavius. Suprascapular nerve C5 C6 and nerve to subclavius C5 C6. So they arise from the upper trunk. Upper trunk means C5 C6. Suprascapular, that supplies the supraspinatus and infraspinatus. Nerve to subclavius, it supplies the subclavius muscle and it may give a root to the phrenic nerve. Branches of brachial plexus, cords. Branches from cords. From the lateral cord, lateral you have to remember LML. The L for lateral pectoral nerve, lateral root of median nerve and musculocutaneous nerve. On the medial cord, medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of the arm, medial cutaneous nerve of the forearm, medial root of the median nerve and the ulnar nerve. So lateral cord is formed by the anterior divisions of the upper and middle trunks. Anterior divisions of upper and middle trunks. Upper trunk is formed by the C5 C6 and middle trunk by the C7. So you get C5 to C6 C7. So lateral cord is from C5 C6 C7. Medial cord is formed from the anterior division of the posterior trunk. Anterior division of posterior trunk. Anterior division of posterior trunk forms the medial cord. Anterior division of lower trunk. Anterior division of lower trunk. So anterior division of lower trunk. Lower trunk is formed from the C8 and T1. C8 and T1. Lower trunk is formed from Lower trunk is formed from C8 and T1. So C8 and T1 anterior division. So medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of arm. So for this medial cord, you can remember a trick called medial cord के लिए you can remember मुंह, तुम्हारा मुंह. M for medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of arm, forearm, medial root of median nerve and ulnar nerve. Ulnar nerve is exception here. For median nerve you get C8 to T1 medial cord. But here C7 also you will get for ulnar nerve. From the posterior cord you can remember ulnar, but there is no ulnar nerve. So posterior cord is ratul. Ratul is radial nerve, axillary nerve, T for thoracodorsal nerve, one nerve to latissimus dorsi, upper scapular nerve, upper subscapular and lower subscapular. So suprascapular you have seen. For subscapular there is upper and lower. Radial nerve. So ratul you can remember ratul. Posterior cord. Radial, or you can remember ulnar. Ulnar also you can remember, but there is no ulnar nerve. And N for nerve to latissimus dorsi. So radial nerve, axillary nerve, thoracodorsal nerve, one nerve to latissimus dorsi, and upper subscapular and lower subscapular nerve. Upper subscapular, lower subscapular, nerve to latissimus dorsi, axillary, radial.
Ratul radial nerve, axillary nerve, thoracodorsal nerve, upper subscapular, lower subscapular. So in posterior cord is formed by all the three. So C5, C6, C7, C8 and T1. So posterior divisions of posterior cord. Posterior divisions of all the three tongues will form the posterior cord. And posterior cord branches are ulnar, but there is no ulnar nerve. Radial nerve, axillary, thoracodorsal, and nerve to latissimus dorsi, upper subscapular, lower subscapular. So posterior cord supplies the muscles of the posterior region, latissimus dorsi, upper subscapular, lower subscapular, axillary nerve and radial nerve. Radial nerve backside, right? Axillary is also backside. So this is about the brachial plexus, but it is not completed yet. We discussed the Erb's point and the clinical thing. The Erb's point, it is the region of the upper trunk of the brachial plexus where 6 nerves meet. What are the 6 nerves? 5th and 6th cervical roots to form the upper trunk. C5, C6 and suprascapular, it is from the upper trunk. Nerve to subclavius, nerve to subclavius, upper trunk. So nerve to subclavius, it supplies the subclavius muscle, which is a small muscle. So subclavius muscle and the anterior and posterior divisions. So actually C5, C6 they form the Erb's point. C5, C6 anterior division and posterior division, upper trunk, anterior division, posterior division, and upper trunk subscapular nerve and the nerve to subclavius. But there is no involvement of the branches coming from the root of the C5, C6. That is your nerve to serratus anterior, long thoracic nerve, and nerve to rhomboides, dorsal scapular nerve, nerve to rhomboides. That's the Erb's point where this is the region of the upper trunk only, where 6 nerves meet. This is the region of the upper trunk where 6 nerves meet. So lesions of brachial plexus, talking about the lesions of brachial plexus. So before that, let's to remember the branches of the cords. Let's discuss in detail. So lateral cord is supplies the nerve to pectoralis major and pectoralis minor. So lateral pectoral nerve of lateral cord LML, musculocutaneous nerve. It supplies this is the nerve which supplies the muscles of front of arm. Example, coracobrachialis. Both long and short of biceps and brachialis. So it supplies the front of arm, muscles of front of arm. Lateral root of median nerve, lateral root of median nerve. It joins with medial root of median nerve to form the median nerve. And this median nerve is the chief nerve of the muscles in front of the forearm, and the muscles of the thenar eminence. Talking about branches of medial cord. So जो medial cord है, it supplies both pectoralis minor and pectoralis major. Medial pectoral nerve and medial cutaneous nerve of arm. Medial cutaneous nerve of arm. Medial cutaneous nerve of arm carries sensory impulses from a small area of medial surface of arm. Medial cutaneous nerve of forearm carries sensory impulses from large area of medial side of forearm. So it supplies the skin sensory impulses. Ulnar nerve reaches by communicating branch from lateral root of median nerve. This is the nerve of 1.5 muscle of front of the forearm and 15 intrinsic muscles of the upper arm.
15 intrinsic muscles. So medial root of median nerve joins the lateral root and gets distributed with branches of median nerve. Medial root of median nerve joins the lateral root and gets distributed with the branches of median nerve. Medial root of median nerve joins the lateral root and gets distributed with the branches of median nerve. Medial root of median nerve joins the lateral root, gets distributed. So branches of posterior cord, upper subscapular. This supplies the large multipinate subscapularis muscle. Lower nerve to latissimus dorsi, muscles of its name, that is, it is also called thoracodorsal nerve. Lower subscapular supply upper subscapular nerve. It helps upper subscapular nerve supplying the subscapularis muscle. In addition, it supplies the teres major. Also teres major. Axillary nerve. Axillary nerve responsible for supplying one of the important muscle of the shoulder, deltoid. Teres minor. So it supplies teres minor and deltoid. Lower subscapular also supplies the teres major. Radial nerve in the thickest branch of brachial plexus supplies all the three heads of triceps brachii muscle. It supplies 12 muscles on the back of forearm. Branches of brachial plexus, the upper limb also supply near the trunk by the suprascapular branches of cervical plexus, by intercostobrachial branch of the second intercostal nerve. Sympathetic nerve are distributed throughout the brachial plexus. The arrangement of various nerves in the axis is studied. Let's talk about the deformity. Erb's palsy, site of injury, one region of the upper trunk of the brachial plexus is called Erb's point. 6 nerves meet here. Injury to the upper trunk causes Erb's paralysis. Upper trunk. Causes of injury, undue separation of the head from the shoulder. अगर मैं आपका हेड एंड शोल्डर को दूर दूर कर दूँ, वो कब होगा जब आप हेड तो बर्थ चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जब बच्चे का हाथ और नीचे करके उसका सर खींच रहे हैं, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द हेड एंड शोल्डर इंक्रीजिंग और फॉल ऑन द शोल्डर, जहाँ पे शोल्डर ज़्यादा दूर हो गया हेड से ड्यूरिंग एनेस्थीसिया. So nerve roots involve mainly C5 and buttress C6. Muscles paralyzed mainly biceps brachii. C5 C6 किसको देता है? C5 C6 is nothing but the lateral cord, upper trunk, lateral cord. और सब में आता है वो एक्चुअली, लेकिन मसल कौन सा इंजूर होगा? बाइसेप्स, डेल्टॉइड, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोइडालिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुपिनेटर. डिफॉर्मिटी क्या होगा? Hangs by side and is adducted and medially rotated. Forearm extended and pronated.
The deformity is known as policeman tip or waiter's tip or porter's tip hand deformity. Disability, the following movements are lost. Abduction and lateral rotation of arm at the shoulder joint is lost. Biceps and supinator jerks are lost. So क्या होता है बोले तो जो आपका lateral rotation of the arm है वो गया, abduction गया, lateral rotation of the arm गया. लैटरल रोटेशन ऑफ द आर्म गया. लैटरल रोटेशन किस वजह से होता है? मैं शोल्डर जॉइंट पे आज ही पढ़ा. देखो लैटरल रोटेशन जब तुम करते हो तो तुम्हारा डेल्टॉइड इन्वॉल्व रहता है. ठीक है, डेल्टॉइड अबडक्शन के टाइम पे डिपेंड करता है कौन सी डिग्री का अबडक्शन कर रहे हो. तो बेसिकली जब तुम अबडक्शन कर रहे हो हाँ, जब तुम अबडक्शन कर रहे हो तुम्हारा डेल्टॉइड है, सुप्रास्पाइनेटस है. अबडक्शन कर रहे हो सुप्रास्पाइनेटस डीएस, अबडक्शन डीएस, दूर जा रहे हो दूर, अबडक्शन दूर 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 जा रहे हो दूर, डेल्टॉइड सुप्रास्पाइनेटस, लैटरल रोटेशन डेल्टॉइड. तो तुम्हारा डेल्टॉइड गया बिकॉज सुप्रास्पाइनेटस गया तो तुम्हारा अबडक्शन गया. फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म. फोरआर्म का तुम फ्लेक्स नहीं कर सकते, सुपिनेट नहीं कर सकते बिकॉज supinator is lost. Biceps and supinator jerks. Sensations are lost a small area over the lower part of the deltoid. Klumpke's paralysis में क्या होता है? लोअर ट्रंक को ब्रेकियल प्लेक्सस इंजूर होता है. कॉज क्या है? undue abduction of the arm as it's clutching something with the hand after a fall from the height. birth injury. तुम्हारे हाथ और सर बहुत नज़दीक आ गए, अबडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तब वो टाइम पे. नर्व रूट्स T1 एंड C8 पार्टली, लेकिन ज़्यादा T1 नुकसान होगा उसमें. अर्ब्स पैरालिसिस में C5 ज़्यादा नुकसान होगा. मसल्स, इंटरेस्टिंग मसल्स ऑफ हैंड गए. अल्नार फ्लेक्सस ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स गया. क्लॉ हैंड ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ लॉन्ग फ्लेक्सस एंड एक्सटेंसस ऑफ द फिंगर्स. Disability, complete claw hand. Complete claw hand. Claw hand देख सकते हैं आप. Complete. Cutaneous anesthesia analgesia is a narrow zone along the ulnar border of the forearm. कभी कभार हॉर्नर सिंड्रोम भी देखने को मिलता है जहाँ पे T1 इंजरी हो रही है. T1 is injured proximal to white ramus communicates to first thoracic sympathetic ganglion. This is a ptosis. मेरे आपका फर्स्ट thoracic sympathetic ganglion इंजूर हो रहा है तो टॉसिस रहेगा. टॉसिस मतलब जो आपकी आईलिड है वो आधी बंद हो जाएगी. मायोसिस एनहाइड्रोसिस एनॉप्थाल्मोस, लॉस ऑफ क्लियोस्पाइनल रिफ्लेक्स. This is because of injury to sympathetic fibers of the head and neck. Vasomotor changes. Skin area with sensory loss is warmer due to anterior dilation. It is drier due to absence of sweating. There is loss of sympathetic activity. Skin area with sensory loss. Trophic changes. Long-standing case of paralysis leads to dry and scaly skin. The nails crack easily with atrophy of the pulp of fingers. अगर सेरेटस एंटीरियर इंजूर हुआ, नर्व ऑफ बेल भी बोलते हैं, अगर वो इंजूर हुआ कि कैसे इंजूर होगा? सडन प्रेशर ऑन शोल्डर फ्रॉम अबव, ऊपर से आपके शोल्डर पे कुछ गिर गया. हैवी लोड्स ऑन द शोल्डर, से हैवी बैग्स लेके जा रहे हो. डिफॉर्मिटी, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, पीछे से आपका स्कैपुला दिखेगा.
excessive prominence of the medial border in the inferior angle of scapula. Normally, the pull of the muscle keeps the medial border against the thoracic wall. जब serratus anterior pull करके रखते हैं ना तो नहीं दिखता है, राइट. डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ पुशिंग पंचिंग एक्शन ड्यूरिंग अटेम्प्ट्स एट पंचिंग द विंगिंग ऑफ स्कैपुला. अगर आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो तब आपका विंगिंग ऑफ स्कैपुला, जब आप मोशन कर रहे हो तब आपका विंगिंग दिखेगा. ओवरहेड अबडक्शन ऑफ शोल्डर girdle is partly affected due to intact trapezius muscle. तो ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए आपको याद रखना है स्टार. पोस्टीरियर कॉर्ड हमने क्या याद रखा, अल्नार. स्टार भी रिमेंबर कर सकते हो. एक्सिलरी आर्टरी, स्लैप द लॉयर, सेव अ पेशेंट भी बोल सकते हो. स्लैप द लॉयर, सेव अ पेशेंट. फर्स्ट पार्ट गिव्स वन ब्रांच. एक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस के ट्रिक है. एक्सिलरी आर्टरी फर्स्ट पार्ट का 8 ब्रांच, सेकेंड पार्ट 2 ब्रांचेस एंड थर्ड पार्ट 3 ब्रांचेस. superior thoracic thoracoacromial, lateral thoracic subscapular, anterior circumflex, posterior circumflex. Slap the lawyer, save a patient. thoracoacromial artery के branches ABCD, acromial, breast, clavicular, deltoid. brachial plexus के branches lateral to medial. My aunt ragged my uncle. So musculocutaneous, axillary, radial, median, ulnar. ब्रेकियल प्लेक्सस जब बॉडी में देख रहे हो तो ब्रेकियल प्लेक्सस. रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बीर. रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बीर. मीडियन नर्व, रिकॉग्नाइजिंग इट एंड to raise your arms up to heaven. तो आप क्लिनिकली सेरेटस एंटेरियर कैसे टेस्ट करोगे? टू आस्क द पेशेंट टू रेज आर्म अप टू 90 डिग्री. क्लिनिकली बाय एबिलिटी टू रेज आर्म पास्ट 90 डिग्री. 90 डिग्री के बाद रेज करो. सो हम थोड़े ना रिलैक्स होने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं. Which of the following is not a branch of posterior cord of brachial plexus? Posterior cord of brachial plexus क्या क्या है? स्टार और अल्नार. यू कैन रिमेंबर. स्टार के लिए क्या है? स्टार, अल्नार या फिर ऋतु रिमेंबर करते तो अल्नार भी देखेगी तो यू फॉर अपर सबस्केपुलर, लोअर सबस्केपुलर, nerve to latissimus dorsi or thoracodorsal nerve. A for axillary, I for radial. तो एक्सिलरी ऑप्शन में है अपर लोअर सबस्केपुलर. सुपरा स्केपुलर ट्रंक से आता है, अपर ट्रंक. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. पॉटर्स टिप और पोलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी ऑफ पैरालिसिस में देखते हो आप. डी. विच इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस में आपको लैटरल पेक्टोरल नर्व मिलेगा और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लैटरल ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व. तो लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व मिलेगा. मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व नहीं, सी. ठीक है. Erb's paralysis causes weakness of all muscles except, सारे मसल्स का वीकनेस एक्सेप्ट ट्राइसेप्स. ट्राइसेप्स को रेडियल नर्व सप्लाई करता है ना, तो डी, बिकॉज वो तो लोअर से आ रहा है. पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला इज फॉर्म बाय ऑल मसल्स एक्सेप्ट.
posterior wall of axilla, latissimus dorsi, teres minor, major, सब स्केपुलर नहीं, टीवीज माइनर नहीं बनाता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला. Okay, boundaries of triangle of auscultation are not found by one of the following structures. Trapezius is not attached to. Posterior primary rami is one of the following nerves to give cutaneous branch. This structure does not lie just deep to trapezius. आंसर्स देख लेते हैं, बाद में जब हम रिफ्यूल होंगे तब देखेंगे. बाउंड्रीज ऑफ ट्राइंगल ऑफ आस्कल्टेशन नॉट फॉर्म्ड बाई upper border of teres major of lumbar plexus of petit formed by all except lumbar triangle of petit are formed by all except quadratus lumborum. लंबे चीज़ें नहीं रहते ट्राइंगल में. lateral border of latissimus dorsi, posterior border of sternum oblique muscle of abdomen, iliac crest. Trapezius is not attached to. trapezius क्लाविकल को कैसे टच करना करेगा, अटैच फर्स्ट रिब को टच नहीं करेगा, रिब को कैसे टच करेगा. पोस्टीरियर प्राइमरी रामी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स गिव्स क्यूटेनियस ब्रांच. S1. This structure does not lie deep to trapezius. Spinal accessory lies deep to trapezius. Superficial branch of transverse cervical artery. Deep branch of transverse cervical artery. तो deep branch नहीं रहता है. Deep to trapezius deep branch नहीं रहता. C3 C4 spinal nerves रहते हैं. अभी तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो थोड़ा सा खा के कुछ करके रिफ्यूल होके विल सी.